ओके सो वेलकम टू यू ऑल अगेन। हम लोग वापस से सेशन में डिस्कस करेंगे गोल्ड का मूव और मोरोवर हमारा जो आज मूव हम लोग का डिपेंड करेगा 9:30 की स्पीक में ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने न्यूज़ सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे अब के सेशन में और डिस्कशन पॉइंट्स पे आएंगे। सो डिस्कस करने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। इफ़ यस काइंडली प्रेस 1 ताकि हम लोग अभी ये वाला सेशन स्टार्ट कर सकें। ओके सो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड के बारे में, कुछ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि न्यूज़ेस क्या क्या है। सो हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट पे। सो आज हमारी 27 सितंबर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ें। सो गोल्ड प्राइस आउटलुक पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड टुडे। गोल्ड प्राइसेस फेल टू रीटेक ugly price action post FOMC. Gold price have unfavorable fundamentals condition. Gold volatility and gold prices abnormal relationship. Gold volatility trading. Gold price remain below former support. XAU USD daily and monthly chart. So gold prices failed to retake. Gold prices failed to retake the uptrend from the May 2019, March 2020 and March 2021 lows and are nearly with their monthly lows. It remains the case that selling the rally may be modest operandi henceforth. According to the IG Client Sentiment Index, gold price surprisingly have a bullish bias in the near term. And ugly price action post FOMC, we have been apprehensive about rallies in gold prices for the past several months. Just 2 days ago, it was noted that what's happening in the gold price is nothing more than a dead cat bounce in recent Fed meeting and moreover meeting from those Fed meetings. Gold prices haven't fared well as US policymakers inched ever close towards making a stimulus taper announcement. सो बात करते हैं फंडामेंटल ओवरव्यूज की। सो गोल्ड प्राइसेस हैव अनफेवरेबल फंडामेंटल कंडीशंस. Price action in the 48-hour the September Fed meeting have vindicated this apprehension towards the gold price rally that marked the start of the week. Now that the FOMC has offered some more clarity on its taper timeline and its tension around China's Evergrande, the country's second largest property developer, is being believed. Gold prices have unfavorable fundamental condition in the near term. Gold ascent has now become a veritable headwind. In particular, now that US Treasury yields are rising, which is translating into higher US Treasury yields. One of the key factors that might have otherwise supported gold ascent has now become a veritable headwind. Historically, gold prices have a relationship with volatility, unlike other asset classes. While other asset classes like bonds and stocks don't like increased volatility, signaling greater uncertainty around cash flows, dividend, coupon payments, etc. Gold tends to benefit during periods of higher volatility. Falling gold volatility and weak correlation suggested continuous difficult trading may be ahead for gold prices. GBIH technical analysis daily price chart September 2020 to September 2021 देख सकते हैं हम लोग के 1 ईयर का डेटा है। ये पूरी तरीके से मार्केट अपसाइड आती हुई जाती हुई दिख रही थी और वापस अब हम लोग की
क्रैश करती हुई दिखी है सितंबर 2021 में। Gold volatility trading. So gold volatility as measured by the CBOE's gold volatility ETF GBIH, which tracks the 1 month implied volatility of gold as derived from the GLD option chase, was trading at 16.37. The relationship between gold prices and the gold volatility remains abnormal. The 5-day correlation between GBIH and the gold prices minus 0.27, while the 20-day correlation is 0.71. 1 week ago, on September 16, the 5-day correlation was minus 0.98 and the 20-day correlation was minus 0.45. Gold price rate technical analysis daily chart from August 2020 to September 2020 देख सकते हैं। अगस्त 2020 में हम लोग के प्राइजेस यहाँ पे थे और सितंबर 2021 में हम लोग के प्राइजेस यहाँ पे एक बार वापस से रिट्रेस करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि जो लेवल देखने को मिल रहा है 1680 का लेवल एक बार वापस से टच होता हुआ दिख सकता है। So gold prices remain below former support. Earlier this week, it was noted that even though a rebound has transpired over the past 24 hours, gold prices remain below former support in the symmetrical triangle that encompasses price action from January through July. Okay, so and more recently have traded below the ascending trend line from the May 19, March 2020 and March 2021 lows. Further weakness can't be ruled out at this time. Gold prices have since failed at these former support levels, Delhi treating them as resistance after appeared to be a dead cat bounce. More losses may be on the way given the posture of momentum indicators. Gold price remain below their 5, 8, 13 and 21 exponential moving average envelope, which is in bearish sequential order. Daily MACD continues to decline while below its signal line, and daily slow stochastics are pushing back into oversold territory. देखेंगे इसको एक बार पहले आ जाते हैं अपने MT4 टर्मिनल पे। तो गोल्ड का मूव वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करते हुए 1750s के लेवल पे 1750.83 के लेवल्स बनते हुए 1751.4548 के लेवल्स पे वापस से एक बार रिबाउंड करती हुई मार्केट लगातार प्राइजेस में एक बार वापस से तेजी 1751 वापस से 1752 तक के टारगेट्स बनाती हुई मार्केट एक बार वापस से रिबाउंड करती हुई देखने को मिल रही है हम लोग को अपने सपोर्ट लेवल से वापस से एक बार अपसाइड।
1752 के लेवल्स बनते हुए हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने डिस्कशन पॉइंट्स पे। तो देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस वीकली चार्ट अक्टूबर 2015 टू सितंबर 2021 की बात करते हैं। तो वीकली चार्ट भी हम लोग की वापस से एक बार अपसाइड मूव दिखाती हुई मिल रही है, लेकिन वापस से जिस तरीके से करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ के लेवल्स 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग 2015 से टू 2021 की उम्मीद करते हैं। सो गोल्ड प्राइजेस टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो गोल्ड प्राइजेस टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम has not improved by any stretch of the imagination in the 48 hours around the September Fed meeting. The weekly 4, 13, and 26 exponential moving average envelope continues to slide lower, while weekly MACD line is dropping further below its signal line. Weekly slow stochastic are accelerating lower below their median line. It remains the case that selling the rally may be the modus operandi henceforth. Gold client positioning and retail trader data shows 74.85% of traders are net long, with the ratio of traders long to the short at 2.98 to 1. The numbers of traders net long is 1.67% lower than yesterday and 4.40% lower from the last week, while the number of traders net short is 15.61% higher than yesterday and 58.37% higher from last week. Gold price trend may soon reverse higher. We typically take a contrarian view to the crowd sentiment, and the fact traders are net long suggests gold price may continue to fall. Yet traders are less net long than yesterday and compared with last week. Recent changes in sentiment warn that the current gold price trend may soon reverse higher despite the fact traders remain net long. तो हम लोगों ने ये डिस्कशन पॉइंट खत्म किया। एक बार MT4 टर्मिनल पे आते हैं तो प्राइसेस 1752 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल 1751.8685 के लेवल्स पे मूवमेंट दिखाते हुए हम लोग देख सकते हैं इस टाइम मार्केट रिकवरी दिखाती हुई मिल रही है। वन डे कैंडल वापस से एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल में मूवमेंट 1752.05। आज की ओपनिंग से 3 पॉइंट्स की तेजी के साथ अभी प्राइसेस मूव करते हुए दिख रहे हैं। 1 मिनट कैंडल वापस से एक बार अपसाइड रिबाउंड करती है 1748 के लेवल से 4 पॉइंट ऊपर 1752 के लेवल्स पे मूव करती हुई दिख रही है। और 1752 के लेवल से वापस से एक बार करेक्शन आती है 1751.8587 के लेवल।
देख सकते हैं प्राइसेस वापस से रिबाउंड लेते हैं 1752.5 टू 1753 की ओर अग्रसर होते हुए। ओके, सो मूव करते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट की ओर। और आज हम लोग कुछ अलग चीज सीखेंगे जो कि हम लेके आए आज, ट्रेड लाइन यूज करना। क्योंकि हम लोग टेक्निकल इंडिकेशन यूज करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ साथ हमारी ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग आज ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देख सकते हैं अबव स्क्रीनशॉट, जो कि first thing, that was the first thing starting me on one morning when I woke up to see how the two trades I placed on Euro GBP went. Both had 130 pips plus floating profits. Total 260 points profit. Did you notice I had not even moved my stop loss to break even during that massive downward move because I dozed off and didn't wake up until in the morning. What a shocker. Well, sometimes that is the best thing to do. Place your trades and go to bed and do nothing or do something else. Because कभी कभी हम लोग को क्या करना चाहिए, मार्केट में ट्रेड लगा के उसके पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। जस्ट लेट फ्री योर माइंड कि मार्केट में तुम लोग जो चाह रहे हो वही होगा। इफ यू आर ट्रूली क्लियर अबाउट दैट, देन आप लोग को मार्केट बार बार ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। So let the market do its job. Explosive and shocking profits, that is the power of the trend line breakout, that trading strategy. So prior to the trade, notice that this pair made a massive move downward and intersected the first upward trend line. What happened? So there was massive worldwide selling of euro when news got out that Greeks were going to dump the euro. Okay, so when Ivish was the closest friend of the Greek finance minister or something, I would have gone heavy. So did I know that such news are coming out? Nope. But because it was such a big, unusual move, curiosity got the better of me. So I did a little research and found out the reason why that happened. And knew it was such a big news that pair would still continue going down. So I placed my trades and went to sleep and managed to catch the second might move. Not bad. 260 pips profit, especially considering that fact I absolutely did nothing except zzz. Well, I'm getting ticket, but I hope you will understand that. So हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रेंड लाइन यूज करते हैं हम लोग। सो पहली ट्रेंड लाइन हम लोग देख रहे हैं कि एक डाउन साइड मूवमेंट के बाद यानी कि अपसाइड मूव किया, फिर बियरिश मूव, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यानी कि हम लोग देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की हम लोगों ने, और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया है हम लोग यहाँ पे बाय साइड बैठ सकते हैं, बिकॉज मार्केट एक बार अपसाइड रिबाउंड कर सकती है। दूसरी हम लोग ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, तो दूसरी ट्रेंड लाइन हम लोग की जो फॉर्म हुई है, in the chart above you notice that my first short entry was based on trend line trading strategy, but the second short trade was based on the trend line because breaking trading strategy when the blue upward trend line got is intersected. So how did I know how to get into such amazing trades like this? So what do I know that you don't know? And when you are starting to at your charts, you see nothing, but when I look
आई सी अपॉर्चुनिटी. सो ऐसी क्या चीजें हैं कि आई नोटिस बट यू डोंट. तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं देखने को मिलता है, बट समवन फाउंड्स अपॉर्चुनिटी. व्हाई सो? सो हम लोग देखते हैं. वेल गेस व्हाट, यू हैव मेड द राइट चॉइस बाय परचेसिंग दिस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी बुक, एंड the result you know also have the trend line breakout trading strategy, and I'll reveal to you all the answers of your question above and a lot more. So in the last chart above, can you see what I am doing here? I am using the trend line breakout trading strategy to add on, and this increases my profits last fast. This is one of my three powerful secrets which I explained in trading trend line strategy secret revealed ebook. So now you can see how the trend line breakouts trading strategy complement the trend line trading strategy. I got good amount of profits from the two trades shown above. Why do you need the trend line breakout strategy? Here's why. If you were just using trend line trading strategy, you would not have a complete trading system. Why? Simply because trend line trading strategy is a trading system based on the obedience of trend lines and not the breakout or intersection of trend lines. That's why the trading breakout trading strategy is used when there is a breakout of trend line. Just one more thing. So you need to read and understand the trend line trading strategy secrets reveal first to understand some of the information inside there, and that will help you understand better. And what I will show here, because I will not cover them too much here, for instance how to draw trend lines versus candlesticks, etc. I am assuming that you will have read, understood and that already. So why do trend lines break? ट्रेंड लाइन ब्रेक क्यों करती है हम लोग इसको देखेंगे. इसके पहले एक बार MT4 टर्मिनल पे आते हैं तो हम लोग की दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 15 मिनट और अभी थोड़े से करेक्शन के साथ. सो वी आर हियर विथ. So trend line are not drawn on concrete, they got intersected. Why this happens? Maybe due to news just like you have just seen above, or it may be due to market responding a much stronger opposing trend line or support or resistance levels. So these are some of the factors that contribute to a trend line being intersected. So when a trend line get intersected, it is a good to have a strategy that will cater for that situation. That is where the trend line breakout trading strategy comes into play. So there are two things you can do when a trend line is broken or get intersected. So do absolutely nothing and wait for another trend line trading entry setup to occur, or use trading trend line okay, trending breakout trading strategy to get into a trade and make some money. So TLBS is one of the most effective trading strategy I use in conjunction with the trend line trading strategy, and here's why. When a trading, okay, so यहाँ से हम लोग अच्छे से देखेंगे. So when a trend line breakout happens, it usually fast. What I mean is that the market moves very quickly away from your entry point एंड यू आर इन प्रॉफिट्स वेरी क्विकली. तो हम लोग देखते हैं कि जब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट में मूव बहुत तेज होता है. तो आपने जहां से भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट आपके एंट्री पॉइंट से बहुत जल्दी दूर जाएगा और आपके प्रॉफिट्स बहुत जल्दी बुक होते हुए दिखेंगे. सो इन हेयर आई एम गोइंग टू रिवील what signals to look for to give you an indication that the trend line might break. How to take a trend line breakout trade, and how to protect yourself, and what to look for during false breakouts, how to manage your trade efficiently, and lots more valuable information you can use to enhance your trading. So look at the chart below. Notice what happened when the upward trend line is intersected. The market move took a nosedive. What if you didn't know how to take a TLB setup? You would have missed out making some good amount of money. This was the same Greek and Euro news thing. तो हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड लाइन हम लोग की पूरी तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट हम लोग को देखने को मिल रही है सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट गई है. जिस तरीके से इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा, पूरी उम्मीद हो गई कि मार्केट गिरेगी,
और यहाँ पे एक बार मार्केट वापस से थोड़ी सी स्टेबल होती हुई वापस से इस लेवल को तोड़ती हुई दिखी है, तो पूरी तरीके से उम्मीद थी कि एक बार करेक्शन होते हुए दिखेगा। So the important point is here, it doesn't matter if you knew there was such a news or not, because you would have still profit big time anyway based on the trend line breakout trading strategy. So TLBS allow you to capture massive profits effortlessly, because when a trend line is intersected, there is usually an explosive move in either direction. It is all about capitalizing on that breakout move, and when it does happen, you stand to make a lot of money quite easily. So this strategy that doesn't require any indicator to clutter up your charts. All is required is the ability to draw a trend line and using price action based on momentum and reversal candlestick to get into high probability trades. And all that is explained in my trading trend line strategy secrets reveal book. Do you need to revisit it? So this is as simple as it could get. तो देख सकते हैं ट्रेडिंग ब्रेकडाउन के हम लोग को ब्रेकआउट की सेटअप्स देखते हैं, तो देख सकते हैं दो बार एक बार हम लोग के सपोर्ट टच करने के बाद मार्केट एक बार क्रैश की है। इसी तरीके से वापस से दो बार टच किया है इसने सपोर्ट को, तीन बार, तो उसके बाद फिर मार्केट क्रैश किया। और इसी तरीके से हम लोग देखें कि अगर ब्रेकआउट बाय सेटअप यानी कि हम लोग के रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए दिख रही है, तो हम लोग को बाय साइड पोजीशन कैरी करनी है। सो एक बार वापस से हम लोग MT4 टर्मिनल पे आएंगे और देखेंगे थोड़ा सा मार्केट का मूव 1751 1750 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए हमारे। 1751.1920 के लेवल्स। देख सकते हैं प्राइसेस वापस से थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ 1751.4748 के लेवल्स पे मूव करते हुए पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। 1 मिनट कैंडल की बात करें तो 1 मिनट कैंडल भी पूरी तरीके से स्टेबल होती हुई 1750 के लेवल पे 1551 के लेवल्स पे आती हुई।
1751.7476 के लेवल्स पे प्राइजेस मूवमेंट दिखाते हुए 4 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे, उसके बाद अपने डिस्कशन पॉइंट पे आएंगे। 1751.6567, तो हम लोग आ जाते हैं एक बार अपने डिस्कशन पॉइंट पे और हम लोग डिस्कस करें कुछ नई चीजें। So XU IPC after US dollar treasury yield weigh on price. Points to be discussed today. Gold price fell last week. Gold prices typically fall. Gold has been trending lower. Gold prices. Gold has trended lower after failing to clear resistance. Gold price daily and weekly chart. Gold bullish. Gold spot versus US dollar. So gold price fell last week. Gold price fell last week after yields rose into the weekend after a hawkish FOMC. Gold faces a tough path ahead against higher yields, PCE figures in focus. Gold prices fell again last week, although the pace of losses slowed as credit risk broadsided market. China's Evergrande Group was the catalyst for sending traders into safe haven assets. Offshore bondholders reported last week that they failed to receive any coupon payments from the Chinese real estate giant. Investors remain on edge as another round of USD coupon payments approaches on October 11th. Instead of gold, investors favored the US dollar. Rate traders sold US government debt last week after the Federal Reserve hinted that it would begin tapering balance sheet growth later this year. The Fed's outlook, so the FOMC decision led to a steepening of the yield curve, which suggests traders are going along with the Fed's outlook that rate hikes are eventually coming on the back of a stronger economic activity and inflation. The SME Group's Fed Watch tool sees a 15.6% chances for a 25 basis point rate hike at the June 2022 Fed FOMC meeting. That is up from 9.9% the week prior. Gold prices typically fall, so a rise in the US Treasury yields typically hurt gold prices as it is a non interest bearing asset. Moreover, when the yields curve rises, gold prices typically fall. This is due to the yield curve's predictive quality concerning rate hike and economic activity. Next week brings the Fed closely watch the inflation gauge core PCE. 9:15 हो चुके हैं, तो हम लोग एक बार वापस से अपने MT4 टर्मिनल पे जाएंगे तो देख सकते हैं प्राइजेस पूरी तरीके से रिकवरी के साथ 1752.5057 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। पूरी तरह से रिकवर करके हुई मार्केट एक बार वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1751.8283 के लेवल्स। सेवनटीन 51.96 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ
1 मिनट कैंडल कम ऑफ देखे तो 1 मिनट कैंडल देख सकते हैं पूरी तरीके से स्टेबल होती, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। 5 मिनट कैंडल अपने बोलिंगर बैंड के मिड बैंड पे फ्लक्चुएट करती हुई 1752 के लेवल्स पे। वापस से मूव करते हैं अपने न्यूज डिस्कशन पॉइंट्स की ओर। सो inflation already well above the Fed's target. Analysts expect the figures to cross the wires at 4.2% on a year-on-year basis, in line with the July's 4.2% increase. A miss on the figure may seen some rate hikes, bet pullback, which could allow gold to rise. However, with inflation already well above the Fed's target, labor market data will offer more relevant information around rate hike risks. That said, Thursday's initial jobless claims data will come on the radar before the September non-farm payrolls report due to out next Friday. Gold has been trading lower, so gold has been trading lower after failing to clear resistance in the 1835 area earlier this month. The recent sell-off accelerated after XAU USD broke below its 50-day simple moving average last week. The US Treasury yield outlook following the September FOMC meeting is likely to create headwinds for non-interest bearing asset in the near term. Gold prices, so Federal Reserve hawkish dot plot along with its announcement that it may be appropriate to start tapering asset purchases in upcoming meetings this year has created headwinds for gold prices. In the near term, in the wake of the September FOMC meeting, US Treasury rates have started to charge higher, with the 10-year yield briefly surging to 1.45% this Friday, its highest level since the beginning of July. So, in the wake of the September FOMC meeting, US Treasury rates have started to charge higher, with the 10-year yield briefly surging to 1.45% on this Friday, its highest level since the beginning of July. Gold has not performed well of late. In general, rising yields can undercut appetite for non interest bearing assets as it raises the opportunity cost of holding positions that do not offer a coupon. This dynamic is in the bond market may be the reason why gold has not performed well of late. Gold has trended lower after falling to clear resistance, leaving fundamental aside and focusing on the technical picture. Gold has trended lower after falling towards clear resistance near the 1835 area earlier this month, setting impeccable lower highs on the way down. The sell-off appeared to have picked up momentum after XAU-USD lost the 1800 psychological mark and broke below the 50-day simple moving average last Wednesday. The daily chart.
So this is frightening as it seems that the bears may have little implement. So this is threatening as it means that the bears may have little implement to drive prices significantly lower from current levels if sentiment towards the precious metal deteriorates again. So a large downside move materialize selling pressure. So should a large downside move materialize, selling pressure could begin to ease around 1680 unless this flow to taken out decisively, in which case we could see a retracement towards 1620, an area of support created by an uptrend line in place since August 2018. A bearish bias. So, on the other hand, if buyers regain control of the market, the first resistance to watch out for appears in the 1785 to 1790 region, where the 50-day simple moving average align with the September 2020 high. If price convincingly break above this area, bulls could reset upside pressure and drive gold towards its 200-day simple moving average, followed by the July September high near 1835. However, for now and in the short term, the scale leans toward the bearish bias. गोल्ड प्राइसेस डेली चार्ट देख सकते हैं. सो वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने MT4 टर्मिनल पे, तो देख सकते हैं प्राइसेस पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए 1751.3848 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल. पूरी तरीके से स्टेबल होती मार्केट इस टाइम पे देखने को मिल रही है. और हम लोग को अभी जो डेटा देखने को मिलने वाला है, हम लोग को 9:30 बजे एक स्पीक देखने को मिलने वाली है, उसको हम लोग लाइव देखने वाले हैं. बिकॉज दिस स्पीक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज हमारी यूएस डॉलर इंडेक्स और इसके साथ ही हमारा गोल्ड के लिए. सो देख सकते हैं आज हमारी मंडे मार्केट और हमारी जो 9:30 बजे न्यूज़ स्टार्ट होने वाली है एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे. एक बार इसके डेटास डिस्कस कर लेते हैं 4 आवर अगो जो हम लोग को देखने को मिला. So quite but nervous start to the new week. The dollar has begun the new week a firm note rising against most major and emerging market currencies. Sterling and the Canadian dollar are the most resilient, while the euro has been sold back below 1.1700 and the greenback is nearing JPY 111.00. The US 10 years yield is up another 4 basis point to 1.49%. European yields are also 2 to 4 pip higher. Oil prices have risen to new highs with November WTI is trailing $75. Natural gas is up more than 3% for the third consecutive session. Gold extended its recovery but ran into a wall of sellers above 1760 and has returned to its below 1750 near midday in Europe. Iron ore is traded higher in China for the third session and it gained Singapore for the fifth session. Copper has back up lower after gaining nearly 1% last week. Equities in Asia Pacific region was mixed with Tokyo, Shanghai as Shenzhen lower. Europe Dow Jones stocks 600 snapped a 3-week drop last week and is posting small gains today. US futures are trading with a modest upside bias.
ओके, सो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. सो राइजिंग यूएस yields are helping the dollar extend its gain against the Japanese yen. The 4-day rally has lifted the greenback from JPY 109 to JPY 111. The move is stretched as the US dollar closed above its upper Bollinger Band last week and remains above it now. The high for the year was set in the early July around JPY 111.65. Initial support is seen around JPY 110.25. The Australian dollar is steady and well within last week's range 0.7220 to minus 0.7315. The intraday momentum indicators for next term near term greenback towards $0.7300. The Aussie has a 3-week slide in tow. For the third time in the fourth session, the dollar has moved less than 0.1% against the China's yuan. In terms of uncertainty, the fallback in Beijing seems to be an even steadier one. The reference rate set by PBOC was tied to expectations. The PBOC continues to inject liquidity into the banking system. Quarter end, the week long holiday starting October 1, and the dislocations caused by Evergrande seem to be the key consolidation. About CNY 50 billion of liquidity was injected yesterday, and another CNY 100 billion was provided today. वापस एक बार MT4 पे आ जाते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस 1751.06. $1751.0810 के लेवल्स बनते हुए हम लोग के पास 1 मिनट का टाइम है और हम लोग आ जाते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे. हियर वी आर. ओके, सो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर में हम लोग देख रहे हैं कि 9:30 का हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को स्पीच देखने को मिल रही है. सो हम लोग आ जाते हैं अपने यूट्यूब पे और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्पीच है. हम लोग लाइव स्पीच को हैंडल करेंगे अपने मार्केट में. सो हम लोग देखने वाले हैं विलियम स्पीक. FOMC member William speak today. So FOMC William speak live. Okay, so we are here to discuss FOMC member William speak. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound confusing. I've actually been material in a grey area. Many companies feel the chill of the recent internet crackdown, but Blue City still runs as usual. Ma has won the Chinese government's trust by helping with HIV prevention among gay men. A third of the company's staff are dedicated to screening pornographic and politically sensitive content. 我不太多的愿意去对抗，我更多的愿意去对话，去改变他们的想法。我觉得这个可能在中国来说是更有效的。In the past 5 years, Blue City has grown from a team of 7 people to a promising business with about 250 staff. Ma said the company earned over $15 million last year, mainly through advertising and selling virtual currencies to live streaming audiences. Now the company is expanding overseas. 我希望吧，通过我们的努力， Blue D 能够成为全球第一家在美国纳斯达克或者是纽交所上市的这样的同质互联网公司。
This is Rich Jigga. He's a Chinese rapper by way of Indonesia, and he's very popular on the internet. This is Joji. He's a Japanese-Australian singer, and he's also very popular on the internet. Plus, Joji invented the Harlem Shake meme. Let me say that again. This guy, Joji, in the blood bathtub, invented the Harlem Shake meme. But we'll come back to that. So Rich and Joji are both signed to 88 Rising, an entertainment company hoping to build a lasting global brand that will outlive singular moments of virality. They primarily create content combining Asian culture and hip-hop, a formula that apparently pleases the internet gods greatly. They've only been around for 18 months, but they're already putting up major label numbers. I think that we have an unprecedented collective of talent, a group of predominantly Asian artists, really making waves globally, which from an independent point of view as well. 88's founder, Sean Miyashiro, cut his teeth launching Vice's electronic music channel, Phone. तो हम लोग वापस से मूव करते हैं अपने ट्रेंड लाइन की ओर. सो अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ these four trade setup is essential for you to take a trade at the appropriate time and also manage your trades carefully. Notice that. TL breakout setup hashtag 1 and hashtag 3 are the immediate breakouts of its trend line. TL breakout setup $2 and hashtag 4 are entry setups based on the temporary retracement or pullback trade setup after the trend lines have been broken or intersected. It is important for you to know that not all breakouts will turn out as the four setups explained above, because there will be fast trend line breakouts as well, breakouts that would seem to be real breakouts only to reverse later and give you stopped out with a loss or break even trades and continue to follow the previous trend line. The objective here is to extract maximum profits out of the trades that go in favor and those losing for break even trades which will happen as a result or of a false breakout will seem very insignificant compared to the profits this will come from your profitable breakout trades. Now I show you that some real charts of each of the above setups so you begin to understand and see how they happen. So trendline breakout sell setup. This is a simple straightforward trendline breakout setup. In this setup, when the upward trend line is intersected, there is very little to no hesitation in downward movement. The market just move quickly down away from the intersected line. देख सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से अपसाइड जाती हुई दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके से इस सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट पूरी तरह से तुरंत क्रैश करती हुई दिखी, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाया. सेकेंड लेवल की बात करें, so this setup is a little bit tricky. In this setup, when the upward trend line is broken, price go down, hesitate and move back to test the trend line that has just broken and then eventually falls. You may call it a pullback or retracement setup after a trend line break. So देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक बार रिवर्स किया, फिर ऊपर गए, फिर एक बार नीचे गई, फिर एक बार ऊपर जाके पूरी तरीके से क्रैश करती हुई दिखी है. नेक्स्ट सेटअप देखेंगे उसके पहले MT4 टर्मिनल पे, तो प्राइजेस देख सकते हैं हमारे स्पीक के दौरान 1752.14 के लेवल्स पे मूव करते हुए. सेवनटीन 52.2122 के लेवल्स पे मूवमेंट दिखाते हुए.
1752.0910 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ। स्पीक के दौरान अभी भी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे हम लोग को। सेवनटीन 51.90 1752 देख सकते हैं प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड मूव करते हुए 1752.1718 के लेवल्स पे पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर प्राइसेस का मूव देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे अपने आगे की चीजें। सेवनटीन 52.25 29 के लेवल। 1752.1112 के लेवल्स। 1752.0204 प्राइसेस पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ 2 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम। देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन और पूरी स्टेबिलिटी के साथ 1751.99 1752 के लेवल्स।
1751.98, 1752. 1751.90, 89 के levels. 1751.89. 1751.80. 1751.81, 82 के लेवल्स पे वनडे कैंडल की बात करें तो एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल लास्ट डे की कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग की बनती हुई दिखी है. अगर वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल लगातार 3 टेरिटरी डाउन होने के बाद एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है. 1751.78, 79 के लेवल्स पे. मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल हो गई है उसी लेवल्स पे 1751 52 के लेवल्स के बीच में. 1751.7879.
गोल्ड न्यूज़ किटको की बात करते हैं तो हम लोग एक क्लिप शेयर करने जा रहे हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. After rallying for 3 straight sessions to fall back down Wednesday morning, gold is now looking to reverse its fate here after the release of the Fed minutes. Frank Holmes, Chief Executive Officer for U.S. Global Investors, joins us now. Frank, good to see you again. Good to be with you. Yeah, gold off its lows, but still down on the day, trading around $12.90 here an ounce, still below the key 1300 level. Frank, what's it going to take for gold to not lose momentum here? It has to do with these 2-year, 5-year interest rates and real interest rates. And the big action this week is going to be CPI numbers. Last was 1.9. And if the 5-year government bond is trading a yield, offering a yield above or below that, it will move gold around. Now, the FOMC meetings, like there's these quant funds that read sentiment and words, and they do word counting, etc. But they can change in a dime comparing it to other meetings. So this initial flurry is just difficult to digest and not confuse you. But it's like gold can't keep the rally going. Yeah, it's amazing that it's what it is. I think that the governments around the central banks, the G20 bankers, are manipulating interest rates. It's very evident. They can play games from 30-year mortgages or 2-year, 5-year, whatever they're doing. And what's really shocking is just the percentage that sort of Swiss, South Korea, and Japan are buying stocks in their own market. They create paper of nowhere, and to make it look all good, they can suppress the price of gold. But they can only do it so long. But there is something going on this massive amount of printing of money, buying stocks, and gold being where it is. It just doesn't make sense. So, Frank, are you saying the gold market is manipulated? I would say that it's smoothed out. There's no doubt. Well, there is a mechanism of playing with bond market. There is a mechanism of moving. Is that it's more balanced in disclosure. They say that now we're going to be focused on 30-year or 20-year or 10-year, and bonds all adapt and adjust, and then the government comes in and buys those bonds, and they move interest rates around. So there's no doubt that they could do this with gold, and there's been just too much litigation on the manipulation that takes place by traders. So there's something that's just not there that can intuitively make sense to the gold market this short period. Okay, well, another part of that equation that you brought up in a recent article of yours, Frank, is you say could be the whole Bitcoin debate, Bitcoin versus gold debate. But you note that you don't feel the cryptocurrencies are necessarily the reason that gold can't hold a rally here. No. Listen, you need electricity for a coin, and B, you can't wear it. And more than 60% of gold consumption is jewelry. It's that love trade, and that can't be forgotten. So I don't think so. And I think that the other part is what's really important, Daniela, is crowdfunding. That is so much easier to open up an account and trade these coins 24/7 than it is to open up an account at Schwab or TD Waterhouse and trade stocks. And there's all these limitations. And I think that that's why the New York Stock Exchange and NASDAQ are piling tons of money into blockchain technology. They made, especially New York Stock Exchange and USAA Insurance Company, made a substantial investment in 2015 in Coinbase, when it had a valuation of 75 million, and today it's got a valuation of 1.7 billion. It is easier, anyone will tell you, to open an account there to trade a currency, and you can arbitrage, etc. So I think the crowdfunding is really hurting the stock market, and it is much more significant. Millennials would rather be able to trade in a currency than, say, gold, unless gold can turn around and go 24 hours. But I would really think it's more, Daniela, it's the stock market. All right. Well, because I was going to say, someone argued that Bitcoin is energizing some investors, especially millennials, in ways that gold might have a hard time doing. To a certain degree, but I think that the real hardcore original cryptocurrency buyers believe in gold. They haven't given up on the gold.
when you talk to the Genesis Mining Group when they first started their company, the first buyers of these coins in a very ardent way were not millennials, it was gold bugs. All right. Frank Holmes, thanks so much for joining us. And thanks for watching this edition of Kitco's Gold Report. We'll be back tomorrow. तो वापस आते हैं गोल्ड के प्राइजेस पे। तो गोल्ड के प्राइजेस 1751.68 के लेवल्स पे 2 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम देखने को मिलने वाला है। देखेंगे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कैसी होती है। एक मिनट बाद दूसरी कैंडल की ओपनिंग का टाइम देखेंगे। दूसरी कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में है और मूवमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। तो किस एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1753.5859 के लेवल्स पे हमारी एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1753.4647 के लेवल्स पे मूवमेंट दिखाते हुए
इस कैंडल का पूरी तरीके से मूवमेंट देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल की बात करें, 1 मिनट कैंडल भी पूरी तरीके से स्टेबल होती हुई बहुत ही कम मोमेंटम के साथ, वोलेटिलिटी बहुत ही कम मार्केट में। हम लोगों ने सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली है और एक बार हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे आ रहे हैं ये देखने की कल कौन कौन से डेटाज हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो कल हम आई ट्यूसडे मार्केट और कल हम लोग को जो डेटा देखने को मिलने वाले शाम को 6 बजे गुड्स ट्रेड बैलेंस और प्रीलिम होलसेल्स इन्वेंट्रीज मंथ टू मंथ जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। शाम 6:30 बजे एफओएमसी मेंबर इवांस पीक देखने को मिलने वाला है। 6:30 बजे ही हम लोग को एचपीआई मंथ टू मंथ एंड एसएफपी सीएस कंपोजिट 20 एचपीआई ईयर टू ईयर एंड 7:30 बजे फेड चेयर जेरोम पवेल टेस्टिफाइज एंड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 7:30 बजे जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा फेड चेयर पवेल टेस्टिफाइज का पड़ेगा। साथ ही रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 7:30 बजे और इसके साथ ही हम लोग को 11:10 पे एफओएमसी मेंबर वुमेन स्पीक देखने को मिलेगा। सो ये हमारे कल के डेटाज हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ वेडनेसडे मार्केट के हम लोग डेटा देखें तो वेडनेसडे के लिए हमारे अच्छे डेटा है। 7:30 बजे पेंडिंग होम सेल्स मंथ टू मंथ, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड स्पीक 9:15 पे और इसके साथ रात में 9:15 बजे फेड चेयर पवेल स्पीक और 11:30 बजे एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक। थर्सडे की मार्केट देख ले तो थर्सडे मार्केट में हम लोग का 6 बजे डेटा फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर टू क्वार्टर। इसके साथ ही 7:15 बजे शिकागो पीएमआई, 7:30 बजे एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक। एंड इसके साथ हम लोग फ्राइडे के डेटास की अगर बात कर ले तो फ्राइडे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेंगे जो कि शाम में 6 बजे पर्सनल इनकम मंथ टू मंथ और पर्सनल स्पेंडिंग मंथ टू मंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 7:15 बजे फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, 7:30 बजे का इंपॉर्टेंट डेटा जो कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इस पे हम लोग की मार्केट पूरी मूव करेगी और देखेंगे कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में। सो मूव करते हैं अपने MT4 टर्मिनल की ओर। तो 15 मिनट कैंडल की बात करें तो थोड़ी सी डाउन आती है 1750 2.76 के लेवल्स पे। हम लोगों ने सारी चीज़ें आज की डिस्कस कर ली हैं। मोस्टली हम लोगों ने मार्केट के ऑल ओवर सिनेरियोज को कवर किया हुआ है। ट्रेंड लाइंस की हम लोगों ने जितनी बात की है अभी हम लोग उतनी ही काफ़ी है। बाकी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे कि और हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ओके, सो हमारी साइड से आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो 4 मिनट का टाइम है, आप लोग पूरी तरह से सबमिट कर सकते हैं। यू हैव 4 मिनट विथ यू और आप लोग पूरी तरह से क्वेरी सबमिट कर सकते हैं जो भी आप लोग को पूछना हो। लाइव चैट सेशन आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग उसमें कमेंट करके अपनी क्वेरीज को सबमिट कर सकते हैं ताकि उसको पूरी तरह से रिजॉल्व किया जा सके। चैट सेशन इज ओपन फॉर यू ऑल। 3 मिनट का टाइम है, अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग सबमिट कर सकते हैं।
और इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर काइंडली प्रेस 100 टू एंड विद दिस सेशन, ताकि हम लोग कल के सेशन में बाकी की चीज़ें डिस्कस कर सके और देख सके बाकी के मूवमेंट गोल्ड के कैसे देखने को मिल रहे हैं। यू आर हैविंग 2 मिनट्स लेफ्ट विद यू। कोई भी क्वेरी हो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं प्राइजेस का मूव 1753.54 के आसपास फिलहाल मूवमेंट के साथ। ओके, सो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं और बाकी की चीज़ें कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कंसंट्रेटिंग। आई एम लिविंग दिस मीटिंग और कल हम लोग वापस से मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कंसंट्रेटिंग एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।